Speaker. A very warm welcome to you, sir, to the 12th Biennial Convention Auto Summit Fit and Future Ready, organized by the Federation of Automobile Dealers Association of India. Please join me in extending a very warm and hearty welcome to Mr. Sailesh Chandra, Guest of Honor, Vice President SAM. We have with us on stage Mr. Manish Raj Singhania, President FADA, and Mr. C.S. Vigneshwara, Vice President FADA. An extremely warm welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, we will begin the formal proceedings of our inaugural session by playing the national anthem first. So may I please request everybody to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, ladies and gentlemen. We will now have the lighting of the ceremonial lamp, and I'd like to at this stage invite on stage Mr. Sai Giridhar, Secretary FADA, Mr. Amar Jatin Seth, Treasurer FADA, Mr. Vinkesh Gulati, Chairman FADA Academy and Research, Mr. Dinesh Kumar, CFO, Kuvi Technology Service Private Limited, Mr. Arvind Kapil, Group Head Retail Assets HDFC Bank Limited, to please come on dais, requesting our Honorable Chief Guest and Guest of Honor and guests on the stage to kindly light the ceremonial lamp. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Thank you, Honorable Chief Guest and dignitaries on the dais, for the lighting of the ceremonial lamp. Ladies and gentlemen, we will now welcome our esteemed guests, and this year we are doing it in a very unique and noble way, which we like to refer as the green welcome gesture. Each guest will be welcomed with a certificate which will ensure planting of a thicket of 11 trees on their behalf. And for this, we have collaborated with the NGO
Give Me Trees Trust. So may I firstly request Mr. Manish Raj Singhania to kindly welcome our Honorable Chief Guest, Shri Om Birla Ji. Thank you. I'd like to now request Mr. C.S. Vigneshwar to kindly welcome Mr. Sailesh Chandra. Thank you. Ladies and gentlemen, the theme for this year's summit is Fit and Future Ready. The summit will aim to address the need for having auto retail, which is fit, agile, and healthy, especially in the post pandemic times, and the preparedness which is required to face disruptions to the advent of newer technologies, changes in distribution model, advent of new fuels, and many such concerns. Ladies and gentlemen, with these words, I would like to now firstly request Mr. Manish Raj Singhania, President FADA, requesting him to kindly make his welcome address. Respected Shri Om Birla Ji, Speaker Lok Sabha, Mr. Narayan Rane Ji, who had joined just few minutes back online with us, Shri Shailesh Chandra Ji, Vice President SIAM and Managing Director Tata Motors Passenger Vehicles and Electric Mobility Limited, and my dear younger brother, Mr. Vigneshwar, our Vice President of FADA, all FADA members present here, Honorable past presidents, industry captains, members from the media, and ladies and gentlemen, namaskar and a good morning. It's a cold, chilly January morning in the capital, and it is full house, which is giving a lot of warmth and thus keeping us comfortable. I wholeheartedly welcome you all to FADA's flagship event, the 12th Auto Summit, on the theme Fit and Future Ready. We did our first Auto Summit in the year 2000, and this is the 12th edition. And it's been 23 years now, and with each passing edition, the Auto Summit is getting bigger, stronger. While all the Auto Summits had happened in our favorite hotel, Le Méridien, but in the past, we really felt with our growing fraternity and growing strength, we needed a bigger place, and that's what our past president dreamt of. And today that dream is realized by having this jam-packed Audi in Taj Palace. And this is the biggest Audi one can have in New Delhi. This is the forum which has made people realize over the years that we employ more than 4.5 million people, and that too without displacing them from their home locations, coupled with continuous on-the-job training and therefore making employment more inclusive. We are one of the biggest revenue collectors for the government. I would also like to reiterate the fact that as auto dealers, we have been making wholesome investments, and if we compare all our investments compared to OEMs, it will be at par what is done in the industry. This is the reason why auto dealers are important and also true nation builders. The 12th Auto Summit will aim to address the need of auto distribution to gear itself in post-pandemic times on preparedness required for facing disruption due to the advent of newer technologies, changes in distribution model, advent of new fuels, and other such concerns to remain viable in businesses and healthy.
Automotive retail is undergoing major change as automakers work to transform the customer experience, drive loyalty, boost market share. Significant changes in the operating environment and within the auto retail ecosystem, such as the rise of new mobility concepts, shifting mobility preferences, digitization, and regulations are making OEMs and dealership to rethink their strategies. The future of auto retail, especially for new age solutions like electric fuel cells and hybrid, lies in being part of the larger lifestyle experience zones for tomorrow's consumers. It is a symbiotic relationship that benefits automakers, lifestyle solution makers, we the dealers, and the consumer. Today, automobile has become the extension of drawing rooms. Customers are also increasingly able to access desired information across channels easily. OEMs and auto dealers should seize this opportunity to transform their retail models to deliver a rich brand experience through seamless integration across all customer-facing channels. Challenges such as how to shift from a product-driven to a customer-centric approach and how to offer mobility services based on value propositions instead of ownerships needs to be addressed. We have carefully crafted 15 plus sessions today, and I hope at the end of today's session, we'll feel like we are well versed with the current trends in auto industry and also carry back with us key takeaways which will make us fit and future ready. During this Auto Summit, you will find many firsts: a CXO panel, an all-women panel, a panel specially designed for Gen X, apart from many discussions which will help improve an auto dealer business, whether financially or by giving a glimpse on new business opportunities, and a session on how to unlock the value of your businesses. Friends, I would like to inform that yesterday we have announced our partnership with Meta, where we'll be digitally skilled 3,000 auto dealers to build a social presence and digitize it using its various platforms. The Move with Meta skilling and enabling program will provide all auto dealers across the country an easy and low cost access to best in class digital expertise. I would also like to inform that post the release of model dealer agreement by Honorable Mr. Vinod Agrawal, President SIAM, in our last ARC that happened in September, we have met 9 OEMs so far. And believe me, the meetings were very warmly welcomed and taken very positively by all the OEMs. What FADA has done has created a level playing field, and with transforming times, the dealer agreements also need to change. That is also being realized by the OEMs, and there would be a great announcement further on today in this session on the MDA that will kind of, that a company has really taken the initiative to take it forward. You will be happy to note that FADA has been able to do some groundbreaking achievements in bringing ease of doing business to the dealership community. With 5 years validity of trade certificate, it brings in a lot of comfort for running the dealership hassle-free for long term. FADA has also made sure that used vehicles are brought under ambit of trade certificate, hence making it an organized business and trade. The final notification has been released only a few days back. इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हम लोग लगातार जो है मौत के साथ लगातार काम कर रहे हैं. जो नए CMVR रूल्स
आए हैं उनको हर एक स्टेट में कैसे अप्लाई करना है और जहां जहां दिक्कतें हैं हम उस स्टेट के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करके कोशिश कर रहे हैं कि सीएमवीआर न्यू सीएमवीआर रूल्स हर एक स्टेट में अक्रॉस इंडिया यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो जाए। बिरला जी, हिंदुस्तान में काम करना डेफिनेटली काफी इंप्रूव हुआ है। लगातार जो है आज केंद्र सरकार काम कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे लागू किया जा सकता है और लगातार बिजनेस कम्युनिटी को हेल्प कर रही है कि कम से कम प्रोसेस या कम से कम प्रोसीजर में जो है कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेसमैन अपना काम जल्द से जल्द चालू कर पाए। पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आज ऑटो डीलर नया बिजनेस या नई डीलरशिप चालू करना चाहते हैं तो उनको 20 से ज्यादा एक्ट्स का और रूल्स का कंप्लायंस करना पड़ता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चीज में इसकी सरलता के लिए हम आपको जरूर अप्रोच करेंगे और इसको सरल बनाने में आपकी इनिशिएटिव और आपकी लीडरशिप के तहत मदद चाहेंगे। We already know we have come under the ambit of MSME. Auto dealerships have come under the ambit of MSME. Sailesh ji, both SIAM and FADA are branches of the same tree. In fact, I would go on to say we are the tires of the same bicycle or car. Not only we are the first customers, but we are also the face of your brands when it comes to the customers with whom we deal day in and day out. We are those arms which create demand and supplies. Auto dealers are the ones which educate customers and understand their needs best, compare products, and give the best choice to the customers as per their requirement. It is the dealers which supply all the needs of the customer, may it be vehicle, service, finance, insurance, etc. We are the link between OEMs and the customers and thus help the auto industry grow. It's also a proud moment for me to announce that we see Father's Day, Mother's Day, these kind of things happening. In the last governing council meeting, it was decided that FADA's founding day, 19th of September, would be declared as Auto Dealers Day and will be celebrated with pomp and glory across all dealership across India. We need support from both SIAM and OEMs to implement the model dealer agreement, which we have prepared after burning midnight oil for more than 2 years. Not only will it help us, but it will also help you in making fit and future ready in relationship with your channel partner. So I hope everybody has a terrifying, exciting day, lots of sessions to gain knowledge from, and a lot of sessions to get prepared for and get fit and future ready. Thank you all and a warm welcome once again. Thank you. Thank you, Mr. Singhania, for your very warm welcome address and for giving us an insight into the various initiatives of FADA and also about this prestigious Auto Summit. Ladies and gentlemen, I'd like to now invite our guest of honor, Mr. Sailesh Chandra, Vice President SIAM, and may I request him to kindly address us. Honorable Shri Om Birla ji, Lok Sabha Speaker, Manish Singhania ji, President FADA, Vigneshwar ji, Vice President FADA, my colleagues from the auto industry, media fraternity, and my dear friends, good morning to all of you. Let me begin by thanking FADA for inviting me for this program.
It is an honor to be here amongst all of you in the inaugural session of FADA Auto Summit 2023. We as SIAM have always closely working with FADA over the years and complemented each other's efforts towards developing the automobile industry. FADA has always strived to represent automotive dealers at different levels across the country. They have been instrumental in developing the automotive retail trade in India via active networking with other industries and government authorities. The Indian auto industry has demonstrated resilience over the last couple of months. The overall vehicle sales numbers increased every month from May to November 2022 on a year-on-year basis. This strong recovery can be seen as a result of collective efforts from both the auto OEMs and the automobile dealers who have been integral in bringing the gap between auto industry and the end consumers. The automotive industry has always been a benchmark of the overall health of the Indian economy. Today, two-wheeler segment dominates the market in terms of volume because of the growing middle class. As the nation grows, the demand for personal mobility will shift towards passenger cars and grow at even a faster pace. Highlighting the need of enhancing current capabilities and investment of new technologies, the need to build safe and future-ready vehicles can't be stressed enough, given that more than 1.5 lakh people become victim of road accidents in India annually. Efforts in the direction of educating people on road safety and vehicle design as per established global standards will help in reduction of road accidents and fatalities. The pressing need to curb carbon emissions is another pressing issue that we must keep in mind while designing vehicles for future. We as manufacturers have invested heavily on research and development to commercialize various alternative fuel vehicle technologies like ethanol blended petrol, fuel cells, electric vehicles, LNG, and so on. The industry has already embarked on the journey of electrification of the Indian transportation sector. More than 7.5 lakh electric vehicles have also benefited from the incentive of FAME scheme. Electric vehicles presently represent about 4 to 5% of total vehicle sales in this year, at least we have seen across all categories. While the growth achieved in adoption of electric mobility so far is commendable on a low base, we still have a long way to go in achieving the e-mobility target of 30% penetration in private cars, 40% of buses, 80% of two-wheelers and three-wheelers sales to be electric by 2030. Today, three major challenges exist in large-scale adoption of electric vehicles in the market. We need to tackle all the major issues, namely high upfront EV cost, limited EV financing options, and sparse EV charging infra, which endanger the onboarding of prospective EV customers. We must develop capabilities for manufacturing key components, including batteries, within the country for long-term sustainable industry development. Domestic manufacturing capabilities related to electric vehicles is going to significantly reduce the cost to the end consumers. Meanwhile, vehicle driving range is often seen as a major concern among consumers before making a purchase decision. Improved battery density and robust charging infrastructure will boost customer confidence and help in faster adoption of electric vehicles. We are at a very critical phase in the transition towards electric mobility. In the nation's quest for energy security and decarbonization of transportation, generation and production of higher blends of ethanol and biofuel usage is also of paramount importance. The auto industry needs to keep moving forward. In the National Policy on Biofuels 2022, as
envisioned by the Honorable Prime Minister while releasing the expert committee report entitled Roadmap for Ethanol Blending in India 2020-25 on the World Environment Day 2021. Another major focus area for Indian government is to regulate and recycle discarded material and the old vehicles, which are harmful to the ecology and environment. The process of utilizing discarded material and end-of-life vehicles will assure feedback supply for the vehicle recycling ecosystem that will be built in the years to come. By collaboration with unorganized sector, the new recycling practices will be promulgated to all the players and produce multiple avenues of economic benefit to the nation. Additionally, the automobile industry needs to ensure practice of safe recycling processes. Reduction in imports due to advanced circular economy will save energy and emissions owing to lower mining. By practicing safe recycling processes, the industry can reduce the environment impact of the current unorganized practices and move India towards the implementation of ESGs to achieve Sustainable Development Goals 2030. FADA members will play an important role in the same because they are the ones in direct touch with the end customers, as Manishji was saying. The capability and ability of FADA members to be the customer's voice and bring marketing intelligence will prove crucial in this journey. I want to reach out to all the leaders present here and those attending the event remotely for coming together and working towards developing the Indian auto industry and providing excellent services to the end customers. Lastly, I thank FADA for coordinating with all the stakeholders and organizing this event, and that in Taj is even better for me as a Tata Group leader. Lastly, I thank FADA for coordinating with all. Thank you for a very nice day, and have a nice day, all of you. Jai Hind. Thank you, Mr. Sailesh Chandra, for your kind address. You shared the pressing importance of newer and cleaner technologies and fuels, the challenges along with the possible solutions for the automobile sector. Ladies and gentlemen, we will now play the video message of Mr. Jeffrey Pohanka, Chairman Designate NADA USA. Can we play the video, please? Hello, I'm Jeff Pohanka, Chairman of the National Automobile Dealers Association in the United States. I regret NADA could not attend FADA's annual convention, but I'm happy we can still communicate despite our distance. We're living in unique times. This year has brought rapid change to American dealers and dealers across the world. We're seeing change in the cars themselves and the way people purchase them. But with change comes opportunities. American dealers are helping to usher in a new era of electric vehicles, or EVs. And we know three things to be certain. One, EVs are here to stay. Two, American dealers are all in on EVs. And three, dealers are essential for an electric future. Electric cars are being built and marketed for the American public. The electric future is being driven by consumer demand and by government emission regulations. Today, dealers are working hard to sell and service them. They're also working to educate, to inform the public, and to build a future that's more sustainable. Through all this, NADA has led dealers through a difficult year. We work to overcome microchip shortages, disruption along the vehicle supply chain, low inventory in dealership lots, and federal regulations that could negatively impact business, employees, and customers. We're in a new era of vehicle ownership, so we're seeing change to the dealer business as well. And this brings lots of questions. What is the role of today's automobile dealer? How are we going to work with our legacy OEMs during this transition? And what is the value of the franchise dealer model today? So NADA has created a statement. It's our guiding principles for our national association as we move into the future of the automobile industry.
Please take a look. We felt as NADA, with all that's changing in our world and in automotive retail, with the electrification of vehicles, with the changing customer expectations when it comes to experience, we put together a group to lead us into the future. And we started with a consensus building process that included some of the best thinkers on our board. We included our ATAEs, and then we went down a 7 to 8 month path of including key stakeholders. Dealer council chairs, influential dealers. We try to find the best retail thinkers in our space. At the end of this, our board, ATAEs, and NADA staff are all on one page, one sheet of music when it comes to where we think our business should go over the next several years. Working with NADA, developed some principles, and the idea is to have the roughly 70 state and metro dealer associations work in conjunction with NADA on these principles that we can all agree to as something that is an industry standard. The idea is we can speak with one voice and be much more effective. Granted, state and local associations have their own parochial issues. As a matter of policy and approach, the idea is the principles help guide everybody through that process. And as our industry is changing, manufacturers have been encouraging online orders direct through the manufacturers and build to order things. And most of the manufacturers thought that the state associations would fight against that, which is not the case. We actually embrace that with stipulations. The dealers have invested great amounts of money in their infrastructure, in the training and the staffing that they've had to implement and service the vehicles beyond the sale and so forth. We don't have a problem with it. As long as we work together to where both sides stand to benefit it, we think it's a good thing. These guiding principles evolved from a small group of our executive committee and some past chairmen, and then we involved the entire board, and then we involved dealers of large groups, medium groups, and smaller groups who have influence throughout the country, as well as our state ATAs. And we've worked on these principles since the beginning of the year. We had discussions about them prior until last year during Paul Walzer's tenure. We're so excited to present these principles as a means of tackling the big issues before us in our space. I'm proud of the work that NADA is doing on behalf of our dealers. We're leading the path to an electric future. We're answering the demands of the American consumer. There's no doubt consumers are demanding dealers in an EV world. The majority of customers prefer purchasing their EVs from dealers. So with the rapid change around us, dealers should lean on their national associations more than ever. NADA will continue to secure and protect the future of the dealer business for years to come. Speaking of the future, I invite you all to attend our 2023 NADA show in Dallas, Texas, from January 26 to 29. We will celebrate our successes through the year, discuss our challenges ahead, and how we can meet in person with dealers from across the United States and the world. I invite all of you to come to celebrate the great industry we're all proud of. On behalf of NADA, we have a wonderful convention. I hope to see you soon. Ladies and gentlemen, as you saw, that was the recorded message. We have the release of the white paper on Fit and Future Ready. And for this, may I please request Mr. Sai Girdhar, Mr. Amar Jatin Seth, Mr. Venkesh Gulati, Mr. Saharsh Damani, and Mr. Harshvardhan Sharma, Head Auto Retail Practice, Nomura Research Institute, requesting them to please join us on stage.
And I'd like to request our chief guest, Shri Om Birla ji, to kindly release this white paper on Fit and Future Ready. Ladies and gentlemen, the white paper on Fit and Future Ready. May I thank you very much. I'd like to now invite next Ms. Garima Mishra, Chairperson, Women in FADA and Chairperson FADA Delhi, to please come on stage. And I request Shri Om Birla ji to kindly release the coffee table book on women in auto retail. I think we all need to encourage women in auto retail. Let's have a big round of applause, ladies and gentlemen. And during the course of the day, we have dedicated an exclusive all-women's session. Thank you. I'd like to now request our chief guest, Shri Om Birla ji, to kindly launch the Buckle Up campaign. This, ladies and gentlemen, is an initiative to spread awareness regarding wearing the seat belt and helmets for keeping roads safer through videos that would be run at almost 25,000 dealerships across the country. So can we have the video screenshot for the Buckle Up campaign, please? अरे इतनी जल्दी पापा? हाँ भाई, टाइम पास मंडली कहाँ चल दिए सुबह सुबह? पापा मौसम अच्छा था तो सोचा लॉन्ग ड्राइव पे चले जाए लोनावाला। मौसम तो अच्छा है। एक मिनट रुको बेटा, एक फोटो तो बनती है ना मेमोरी के लिए। हाँ, अब स्माइली फेस नहीं, सीरियस फेस। हो गया, अब चले? अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो लता, ये जुगनू बाहर जा रहा है, इसका फेवरेट गाजर का हलवा तो बना दो। पापा हम निकल रहे हैं, और सुबह सुबह हलवा कौन खाता है? अच्छा बेटा, तो अपनी माँ से तो बात करता जाना, अब पता नहीं फिर बात हो ना हो। पापा सुबह सुबह क्या बोल रहे हो? अच्छा, और तुम लोग जो बिना सीट बेल्ट लगाए जा रहे हो, तो सीधे बोल देते ना, इतना मेलोड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बोला तो 1000 बार है, लेकिन बिना ड्रामा के तुम्हें समझ में आता है क्या? अब सीट बेल्ट लगाओ जल्दी, और हाँ पीछे वालों तुम सब भी। अब ठीक है। हैप्पी जर्नी बेटा। ऑटो। मैं ड्रॉप कर दूं? जाना तो था, लेकिन तुम रेडी नहीं लग रहे। रेडी नहीं? रेडी तो
ये लो, तुम भी रेडी हो जाओ। अरे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़ने दो, लेकिन इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। बाकी बात मैं ऑफिस पहुंच के करता हूँ। सर, ये इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस, मानो अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मेरी जान चली जाती है, तो मेरे घर वालों को अपना ख्याल रखने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। बस यही तो है लाइफ इंश्योरेंस। सेफ्टी है और होनी भी चाहिए। पर एक बात कहूँ सर, सेफ्टी तो सीट बेल्ट लगाने में भी है। इंश्योरेंस तो ठीक है, लेकिन लाइफ भी तो जरूरी है ना सर। Some very key safety initiatives so important for safer lives and safer roads. Ladies and gentlemen, we now have the Green Initiative Pledge, and I request the dealer community present here to kindly take the noble pledge for the distribution of a sapling with sale of every vehicle in the presence of Shri Om Birla Ji. And I request Shri Om Birla Ji to kindly read out this pledge. हेलो, हेलो, सभी के पास प्रतिज्ञा पत्र होंगे, तो मैं के बाद आप नाम बोलेंगे। मैं एक जिम्मेदार ऑटो डीलर ऑफ फेडरेशन ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि हमारे जीवन के लिए वायु की गुणवत्ता में सुधार पर मुख्य ध्यान देने के साथ साथ हमारे ग्रह को संरक्षित करने में योगदान दूंगा और मेरे शहर के हरित आवरण को बढ़ाऊंगा। इस नेक उद्देश्य के लिए मैं उस ग्राहक को एक पौधा देकर प्रोत्साहित करूंगा जो हमसे नया वाहन खरीदेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Shri Om Birla Ji. Thank you, ladies and gentlemen, for taking that green pledge. We will now present the exemplary contribution to automobile dealer fraternity felicitation, and this is going to be given to Mr. KVS Prakash Rao, who's the past president of FADA.
I'd firstly like to invite Shri Sai Girdhar to please come on the dais and read out the citation. Good morning, friends. With immense gratitude, FADA is delighted to present its gesture of appreciation for the role played by Shri KVS Prakash Rao for the promotion of automobile retail trade. He is recognized by the industry and trade for relentless pursuit of his vision in automobile retail trade, encompassing commercial vehicles, passenger cars, two-wheelers, and construction equipment. He has been driving force in straining his dealership, Messrs. Garpati Auto Ventures and Ramco to new heights. His role as president of FADA during the year 2014 to 16 is remembered for revolutionizing and initiating the required changes within the federation, thereby helping and strengthening the voice of dealers. He continues to be an inspiration for everyone in auto retail fraternity. In the view of his pioneering role for tremendous contribution, FADA, Federation of Automobile Dealer Association, is delighted to privilege to facilitate Shri KVS Prakash Rao on the date 13 Jan 2013 and bestow upon him the award for exemplary contribution to automobile dealer fraternity. Can we have sir on stage, please? I now request our chief guest, Shri Om Birla Ji, to, along with Mr. Manish Raj Singhania, to kindly felicitate Mr. KVS Prakash Rao. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. Many warm congratulations. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, we are very pleased and honored to have with us Shri Om Birla Ji, a distinguished politician, agriculturist and social worker, who's the 17th and current Speaker of the Lok Sabha. So thank you so much for joining us here, and may I now request you to kindly address the august gathering. Federation of ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की 12वीं ऑटो समिट के अंदर टाटा मोटर के एमडी श्री सुरेश चंद्रा जी, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनीष राज सिंघानिया जी, एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री सीएस विघ्नेश्वर जी, पुराने एसोसिएशन के अध्यक्ष जिन्होंने इस एसोसिएशन को के कामों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया, और देश भर के आए सभी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के डीलर भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और विशेष रूप से इसलिए भी कि आप केवल
मोटर व्हीकल गाड़ियां ही बेचने का काम नहीं कर रहे। आप बेचने के साथ साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। एक ऐसी पहल, एक ऐसी शुरुआत आपने की है जिससे हमारे प्रयासों से समाज के अंदर, व्यक्ति के जीवन के अंदर एक सामाजिक परिवर्तन आए। और इसके लिए आपने एक नई शुरुआत की, जिसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि विशेष रूप से आपने गाड़ियों से जो कुछ प्रदूषण होता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के दौर चल रहा है, उस प्रदूषण रोकने में हमारे क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए एक गाड़ी के साथ एक पौधा आप देंगे और 1 वर्ष के अंदर 2 करोड़ जो व्यक्ति पौधा लेकर जाए, वो पौधा लगाए, पाले, संरक्षण करे, तो 2 करोड़ पौधे आपकी एसोसिएशन के सभी सदस्य देश भर में बांटेंगे और एक बड़ा हरित क्रांति का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। अगर ये प्रयास सामूहिक रूप से हमारा पूरा देश करने लग जाए, हम हमेशा वसुदेव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, संस्कार है, सामाजिक सेवा, समर्पण हमारे जीवन में है। हमने कोविड के समय दुनिया को बता दिया कि हमारी सामूहिकता की शक्ति से इतनी विशाल देश के अंदर हमने जो कुछ भी एक दूसरे के सहयोग से बन सका किया और हमने एक मजबूत सामूहिक भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। और इसी तरीके के प्रयास जो आपने शुरुआत किए, उससे नए लोगों को प्रेरणा मिलेगी, अलग अलग एसोसिएशन को प्रेरणा मिलेगी, इंडस्ट्रीज को प्रेरणा मिलेगी, सर्विस सेक्टर के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और जो हमारा लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन के विषय पर, जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर कहा है कि आबादी की दृष्टि से हम 17% हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन की दृष्टि से हम कम है, और उसको और लक्ष्य के साथ पूरा करने का काम करेंगे। इस संकल्प में आपके सहयोग के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह बात सही है कि दुनिया के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर कोई समय था जब पेट्रोल डीजल पर गाड़ियां चलती थी। आज युग परिवर्तन हो रहा है। आज पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी आई है, एलपीजी आई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए, अब हाइड्रो व्हीकल आने की तैयारी भारत के अंदर है। मुझे लगता है कि ये एक परिवर्तन का दौर है और इस परिवर्तन के दौर के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका डीलर्स की होती है, क्योंकि डीलर्स और ग्राहक का संबंध सबसे नजदीक होता है। मैन्युफैक्चरर्स कितनी भी बेहतरीन गाड़ी का उत्पादन कर ले, लेकिन जो डीलर होता है वो गाड़ी के फीचर को किस तरीके से अपना ग्राहक के सामने प्रेजेंटेशन करता है, उस पर ग्राहक उस गाड़ी की खरीदने की मनस्थिति को बनती है।
और इसलिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां पर रोज नई तकनीकी हो रही है, नया इनोवेशन हो रहा है, नया रिसर्च हो रहा है, और नई तकनीकी रिसर्च के साथ जहां मैन्युफैक्चरर्स को भी लगातार अपने आप को बदलाव करने की आवश्यकता पड़ रही है, और उसी के साथ डीलर्स को भी उन नए फीचर के साथ, नए बदलाव के साथ ग्राहकों के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। मुझे आशा है कि मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स और ग्राहक का एक मजबूत संबंध, ये तीनों कड़ी ठीक से जुड़ेगी तो हम इस भारत के अंदर जो हमारा अंतिम उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता को सही जानकारी भी दे पाएंगे, और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जैसा आपने वीडियो बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से भी और सड़क सुरक्षा दृष्टि से आपने एक व्यापक अभियान चलाया है। संसद में भी इस विषय पर एक व्यापक चर्चा हुई है। सरकार ने भी तय किया है कि हम सड़क दुर्घटना को आने वाले समय में 50% कम करेंगे। इसके लिए जहां मैन्युफैक्चरर्स का भी योगदान है कि नए सुरक्षा के नए फीचर के साथ नई गाड़ी निकाले, उस गाड़ी की कीमत भी ग्राहकों के अनुकूल रहे, और डीलर ग्राहक को सुरक्षा के नए फीचर की जानकारी दे, ताकि एक कड़ी जुड़ेगी और हम सड़क सुरक्षा के रूप में एक नए कीर्तिमान हासिल कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य 50% को पूरा करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, और इसीलिए हमें एक ग्राहक को सारी जानकारी, उसकी गाड़ी की सुरक्षा की जानकारी, चलाते समय क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम करने उसकी जानकारी, और उसके साथ साथ जब कभी दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना के बाद अगर सबसे ज्यादा पहला संबंध रहता है तो वो आपका रहता है, क्योंकि वह जब गाड़ी ठीक कराने आता है तो आप उससे पूरी जानकारी लेते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट कहां हुआ, किस स्थान पर हुआ, होने के क्या कारण है। इसके लिए आपके पास जो जानकारी मिल सकती है, एक ग्राहक से आपका नजदीक संबंध होने के कारण, कि आप एक नया रिसर्च कर सकते हैं कि देश के किस इलाके के अंदर ज्यादा दुर्घटनाएं होती है, दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण हैं, और दुर्घटना के बाद हमें उसके उपचार के लिए, त्वरित गति के लिए क्या क्या प्लान करना है। अभी मैं टाटा के एमडी साहब को बोल रहा था कि हमें बेसिक प्लान बनाने की आवश्यकता है कि डीलर ग्राहक को संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हम रोड साइड जितने एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती है, जिस इलाके के अंदर ज्यादा दुर्घटना होती है, हम त्वरित गति से डीलर, मैन्युफैक्चरर अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए दुर्घटना के बाद हम उसको नजदीक के अस्पताल में ले जाएं। इसके लिए हमें फास्ट एम्बुलेंस और उस एम्बुलेंस में सारे फीचर्स हो, ताकि वो चलता फिरता एक हॉस्पिटल हो, ताकि हम दुर्घटना के बाद उसको बचाने में कामयाब हो सके। और मेरा मानना है कि हमने एक व्यक्ति की भी जिंदगी बचा ली तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। मैंने उस दर्द को देखा, उस पीड़ा को देखा है, जब दुर्घटना के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी की मृत्यु होती है तो नौजवान की होती है, उसका सारा परिवार उस पर आश्रित होता है। गांव ढानी से चलता है, शहर में काम करने आता है, बड़ी सपने लेकर आता है, लेकिन दुर्घटना के बाद चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे काम करने में असक्षम हो जाए,
वो सबसे मन की उसकी पीड़ा है। इसलिए हमें डीलर होने के नाते उसके सुरक्षा के इंतजाम, उसके इंश्योरेंस की पॉलिसी और दुर्घटना के बाद जो उस राज्य की सरकारों ने जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं की जानकारी, केंद्र की योजनाओं की जानकारी, ताकि उसको उन राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ अगर हम जोड़ के रखेंगे, मानो कोई दुर्घटना के अंदर कोई योजना है, राज्य सरकार की दुर्घटना में किसी को इतना पैसा मिलना चाहिए, कोई बीमा की योजना है, कोई प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, तमाम योजनाओं की जानकारी भी गाड़ी को बेचने के साथ साथ अगर हम उपभोक्ता को देंगे तो शायद हम पहले सुरक्षा की दृष्टि से उनकी जिंदगी बचाने की बात करेंगे, दुर्घटना के बाद उसके बेहतर इलाज का काम करेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं बच पाया तो उसकी बाकी जिंदगी, परिवार के पालन पोषण का इंतजाम हो। ये सारा काम बेहतरीन तरीके से कर सकता है तो डीलर ही कर सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक पर्यावरण की बात की, सड़क सुरक्षा की बात की, आपने सुरक्षा के इंतजाम की बात की, लेकिन कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां आपकी भी है। और निश्चित रूप से आपकी एसोसिएशन लगातार इस बात पर कहीं न कहीं कई बिंदुओं पर सरकार के संपर्क में रहती है कि किस तरीके से, क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जब एक कोई कंपनी बंद हो जाती है तो काफी बड़ी संख्या के अंदर लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और अचानक कंपनी ने कहा कि आज से हमारी तालाबंदी होगी। वो डीलर और डीलर से काम करने वाले सारे लोगों की बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इसका एक मॉडल बनना चाहिए, जो मुझे सिंघानिया जी ने बताया है। मेरी कोशिश होगी, मैं तो सुनने वाला हूं संसद में, लेकिन मेरी अपेक्षा होगी कि संसद सदस्य सड़क सुरक्षा के बारे में बात करते समय कुछ डीलर्स के, कुछ फ्रेंचाइजीज के, कुछ इश्यूज पर भी चर्चा करेंगे और अपने विषयों को रखेंगे। जब संसद या विधानमंडल में अपने विषयों को रखेंगे तो निश्चित मेरी कोशिश होगी कि उचित समय पे उचित डायरेक्शन दूं, ताकि आपकी समस्या का समाधान भी हो सके। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के अंदर भारत वो देश है जो आर्थिक रूप से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है, और दुनिया के अंदर आर्थिक डेस्टिनेशन के रूप में भी सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान आज भारत के अंदर है। और ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है, जब मैं कहीं जाता हूं तो मैं देखता हूं, मैं बड़े देश में भी गया, छोटे देश में भी गया। छोटे देश में मैंने युगांडा में देखा टू व्हीलर गाड़ी किसकी, भारत की। मैक्सिको में मैंने ट्रैक्टर देखा तो भारत का। हमें गर्व होता है कि एक समय था जब भारत केवल बाहर से पुर्जे लाकर गाड़ियों का असेंबल करने का काम करता था। आज हमें गर्व है कि भारत अभी भी एक्सपोर्ट के रूप में सबसे बड़ा आगे। आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में भारत नेतृत्व करेगा। ये क्षमता हमारे नौजवानों की अद्भुत क्षमता, इनोवेशन, रिसर्च की नई क्षमता है, और इसलिए हमें भरोसा है कि दुनिया के जो विकसित देश नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी लाते थे, एक समय यह आएगा जब भारत टेक्नोलॉजी के बारे में भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, नए फीचर के रूप में भी भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी इनोवेशन क्षमता, उनकी रिसर्च की क्षमता के आधार पर भारत की गाड़ियां दुनिया में बिकने लगेगी। और ये हमें गर्व है कि जो नए रिसर्च है, नए इनोवेशन है, और भारत ने करने शुरू कर दिए हैं। हमारे नौजवानों ने जिस तरीके से आज नए स्टार्टअप के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों, भारत की चुनौतियों, उसका समाधान भारत का नौजवान करने लगा है। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर रेवेन्यू की दृष्टि से सबसे बड़ा सेक्टर है और भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है। इसलिए इस सेक्टर को
आर्थिक रूप से भी मजबूत करना पड़ेगा। जितना आर्थिक रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर मजबूत होगा, भारत की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत होगी। मुझे आशा है कि यहाँ पर डीलर्स भी बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के रूप में भी बैठे हैं। हम किस तरीके से बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को दुनिया की बेहतरीन गाड़ी दे सकें, सुरक्षा की दृष्टि से भी, नए फ्यूल, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, ताकि आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सके। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो रेवेन्यू आती है, जो आर्थिक तंत्र का सबसे ज्यादा अगर बड़ा हिस्सा आता है तो ऑटोमोबाइल से आता है, वो हम हमारे देश के अंदर उत्पादित गाड़ियों का यूज करें और आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत की बनी हुई गाड़ियां दुनिया के अंदर बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं पुनः डीलर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, नए सामाजिक संकल्प लिए हैं। और आने वाले समय में आपने जो सामाजिक संकल्प लिए हैं, चाहे पर्यावरण को सुरक्षित करने का हो, चाहे सबसे बड़ा काम और महत्वपूर्ण काम है लोगों की जिंदगियां बचाने का काम आपने शुरू किया है। अगर आप पूरे संकल्प के साथ काम करेंगे तो हम सब मिलकर इस दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे कम दुर्घटना वाले देश बने, ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम लोगों की जिंदगियों को बचा सकें और भारत सड़क सुरक्षा दृष्टि से एक लैंडमार्क बने कि इतने बड़े विशाल देश के अंदर, इतनी विविधता वाले देश के अंदर किस तरीके से हमने सामाजिक सहयोग से सबके साथ मिलकर सड़क दुर्घटना रोकने में नया व्यापक इंतजाम किया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद श्री ओम बिरला जी। आपने इस क्षेत्र के अनेक उल्लेखनीय पहलों को सराहा और हमें मार्गदर्शित किया। इसके लिए हम सब की ओर से आपका फिर से एक बारी बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, I would like to now invite Mr. C.S. Vigneshwar, Vice President FADA, and I would like to request him to kindly propose a vote of thanks. Shri Om Birla ji, Honorable Speaker Lok Sabha, thank you so much for being here, sir. Thanks for giving your time. Thank you for recognizing the dealer contributions to nation building. We will keep also environment, the planet, green initiatives as a core pledge in our operations.